Sir, I move for leave to introduce a bill to provide for protection of the privacy of individuals relating to their personal data, specify the flow and usage of personal data, create a relationship of trust between persons and entities processing the personal data, protect the rights of individuals whose personal data are processed, to create a framework for organizational and technical measures in processing of data, laying down norms for social media intermediary, cross-border transfer, accountability of entities processing personal data, remedies for unauthorized and harmful processing, and to establish a Data Protection Authority of India for the said purposes and for matters connected therewith and incidental thereto. माननीय अध्यक्ष जी, आपकी कमेटी में जाए, आपको तो लंबी डिस्कस करना है। अच्छा अब नो नोटिस दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस बिल के इस सदन में जो मैंने रखा है, इस पर जितनी आपत्तियां आई हैं मैंने उनको सुना है। मैं बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा। मैं फिर कहूंगा, माननीय अधीर बाबू का बहुत सम्मान करता हूं, बट यू हैव नॉट बीन ब्रीफ्ड वेल टुडे, विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू यू। द सेम शुड बी एप्लीकेबल टू अदर्स। अच्छा, अपनी बोशन अब मुझे बोले दीजिए ना, अब मुझे बोले दीजिए। अब आगे से फिर आपका मैं नाम नहीं लूंगा, फिर आदर कम हो जाएगा। सर, व्हाट आई एम सेइंग इज, आगे से आप व्यवस्था करना, आप आसन से बात करना, इनसे बात ही मत करना। ओके सर, आई वुड लाइक टू वेरी रेस्पेक्टफुली कन्वे टू दिस हाउस that the members are right that the Supreme Court had held that privacy is a fundamental right. But the Supreme Court has also added and a corrupt person has no right of privacy. The second thing is, to Saugat Babu, with greatest respect to you, the Supreme Court in the Aadhaar case itself has emphasized that we must come with a data protection law. Therefore, there is a mandate of Supreme Court also that we must come with a data protection law. आपनी बोशन आपनी. Sir, the second thing which is very important to be noted is, sir, we have not come with this bill suddenly. We set up a committee headed by a very distinguished retired Supreme Court Judge, Judge Sri Krishna. They had set up a member committee also, sir. They had the widest consultation in the entire country. 2,000 recommendations came. Thereafter we discussed, we have come here. Sir, what is the essence of this? Because a lot of things have been said on surveillance. One is a data principle. Who is a data principle? The individual whose personal data is under question. Second is data fiduciary. And the architecture of the bill is, without consent of the individual, if his data is taken, he will suffer penalty. The second is, if you misuse the data beyond the permissible consent, you will suffer consequences. And we have given provision of penalty of crores of rupees on all the persons. Therefore, by this data protection, we are safeguarding the rights of Indians. I would like to convey with the greatest of respect, sir. But I too take this point, sir. India's digital economy is rising. We have got 130 crore population, 121 crore mobile phone. We generate a lot of data, but a lot of data is also important for development of economy. And sir, we have also making a provision that anonymized data must be available for policy making, for innovation, for further things. And one thing I would like to convey to this honorable house, sir, that we have decided data into three categories. One is critical data. Critical data is what the government will notify from time to time. Sensitive data, your income, your medical record, your sexual preferences, whole lot of things, they are sensitive data. Critical data cannot go out of India at all. Sensitive data can go out of India only with the consent of the individual and with the approval of the authority. Therefore, sir, what about surveillance? Completely wrong, unsustainable, malicious, misleading. What we are doing is, we are protecting the privacy of India's, उनकी निजता की रक्षा कर रहे हैं, उनकी डेटा की रक्षा कर रहे हैं, और उनके अनुमति सहमति के बिना कोई भी नहीं ले सकता, वरना करोड़ों का फाइन लगेगा। तो सर, हम इतनी बड़ी चीज लेकर के आ रहे हैं चर्चा के बाद। लेकिन सर, मैं एक बात, इस बात को मैं मानता हूं कि चूंकि ये विषय संवेदनशील है
और पूरी दुनिया भी भारत के डेटा प्रोटेक्शन लॉ की प्रतीक्षा कर रही है, तो भले ही इसके बनने के समय में बहुत चर्चा हुई है, हम चाहते हैं संसद की समितियों की भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। ये हमारी सरकार का मानस है। तो सर, हमने एक बात फैसला किया है, हम कल प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि दोनों सदनों की सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी सर इसको विचार करे सर, वो हम लेकर के आएंगे सर। और हम चाहेंगे दोनों सदनों की, you are the chairman, you cannot speak in your calls. Mr. Shashi Tharoor, the chairman sir, just a minute. Mr. Shashi Tharoor is the chairman of the committee, he should not advocate his own cause. Sir, मैं क्या, अच्छा एक मिनट प्लीज सर, हमारा कहना है सर कि ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ बहुत महत्वपूर्ण लॉ है और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी दोनों हाउसेस की, जिसमें सभी सदनों के लोग उपस्थित रहेंगे, सर मुझे बोलने दें, सर मुझे बोलने दें। सर, स्टैंडिंग कमेटी स्कोप is well known. I don't want to question. Standing committee has do a lot of work. This joint select committee will be dedicated only and only for data protection law. और हम चाहते हैं सर, इसका प्रस्ताव लेकर के कल हम आएंगे सर। हम चाहते हैं अगले बजट सेशन के पहले ये तैयार हो जाए सर। इसके लिए डेडिकेटेड रूप से, अरे भाई आपके लोग भी रहेंगे, ना जस्ट मिनट, और दोनों हाउस के लोग रहेंगे। तो सर हमारा ऐसा मत है सर, चर्चा भी किया है, हम एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को लेकर के आएंगे प्रस्ताव सर, और इस पूरे डेटा प्रोटेक्शन लॉ का विस्तारित विवेचन हो सर, ये हमारी आकांक्षा है। लेट the parliamentary process examine this in the most detailed manner possible, sir, and I think the select committee will have good numbers from opposition of this house and that house.